the 2 points A and B. They are given. What we have to do, we have to form the equation of perpendicular bisector of the line AB. We do not have to form the equation of, we do not have to draw the equation, form the equation of the line AB itself. Line AB की हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है that line is perpendicular bisector of line AB. So first of all, we must know what is the meaning of perpendicular bisector. Okay, I've mentioned two things. What is perpendicular bisector? Perpendicular bisector itself is composition of two terms, two words. The first one is perpendicular, the second is bisector. Perpendicular means intersecting at an angle of 90 degree. यानी perpendicular का मतलब क्या होता है? जैसे x axis और y axis, they always intersect at 90 degree. अच्छा, second thing, bisector. Bisector का मतलब क्या है? Bisector का मतलब ये है कि that passes through the midpoint. That passes through the midpoint. So I want you to please wait. Sorry. Okay, continuing it. देखो दो चीजें हैं, perpendicular का मतलब that is intersecting at an angle of 90 degree and bisector का मतलब क्या है, that passes through the midpoint. Actually bisector का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो किसी और लाइन को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, किसी और लाइन को, किसी और एंगल को, किसी भी शेप को, ठीक है। तो जब किसी शेप को कोई बाइसेक्ट करता है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अगर कोई किसी लाइन को बाइसेक्ट करता है तो हम उसको बाइसेक्टर लाइन कहते हैं। अगर कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है तो हम उसको एंगल बाइसेक्टर्स कहते हैं। So here we are talking about a perpendicular bisector. That means a straight line. So now let's read it from here. So a perpendicular bisector of line AB is such a straight line. It is a straight line that bisects and it touches at midpoint of line AB and makes an angle of 90 degree at the point of intersection. We came to know two things. ठीक है? This is actually what perpendicular bisector is. Okay, I'm pausing it here. अगर किसी को perpendicular bisector का मतलब नहीं समझ आया, please let me know by turning on your mic. Tell me your name first and then ask me the question. Okay. ठीक है, अब वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बेटा एक बात ये याद रखिएगा, हमें एक्चुअली करना क्या है, इक्वेशन बनानी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आई हैव टोल्ड यू 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स बताए हैं। इफ यू पीपल रिमेंबर, उन 3 स्टेप्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, लेकिन उन 3 स्टेप से पहले क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट्स की बात हुई है, बाइसेक्टर की बात हुई है, याद रखिएगा बाइसेक्टर की बात हुई है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं वैसे। ओके, ये है ना पॉइंट्स ए एंड बी, इसको मैं ग्राफ के ऊपर बना के दिखाता हूँ तो हमें ज्यादा चीज समझ आ जाएगी। लुक, दिस इज पॉइंट ए 3, -1 and this is point B 1, 3. Fine. This is a straight line AB.
This is a straight line AB. Now, question is, we have to find what? Yeah, wait कीजिए, someone is there at lobby. Okay. Continuing it, sorry for the disturbance. Beta, now keep this in mind. From the next week, I'm not going to allow the students up to 12. ठीक है? भले disconnection हो या जो भी हो, I won't allow. We do not have to have a disconnection. चलो भैया, we'll talk this later. This is the line AB. We do not have to form the equation of the line AB itself. We have to form the equation of a line which is perpendicular bisector of this line AB. ठीक है? तो perpendicular bisector का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगी और 90 डिग्री बनाएगी. A straight line that will passes through the midpoint of this. ऐसे ही अभी for सपोजिशन सपोज कर लिया कि भाई ये है वो मिड पॉइंट और एक ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर गुजरेगी. हमें एक्चुअली ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए. हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. फाइन. हमें लाइन ए बी की इक्वेशन नहीं चाहिए. एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से गुजरे और 90 डिग्री फॉर्म करे ए बी से. हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. ठीक हो गई जी बात. सो for this, what are the things that we are going to do? First of all, we are going to find the midpoint. So please look over here. Midpoint of line AB, formula apply here. X coordinates are 3 and 1. Y coordinates are -1 and 3. We solved it. We came to know that the coordinates of the midpoint of line AB are 2, 1. Are 2, 1. Fine. सर मिड पॉइंट हमने क्यों फाइंड किया? हमें क्यों फाइंड करना है मिड पॉइंट? हमें तो इक्वेशन के 3 स्टेप्स करने चाहिए थे. हमने मिड पॉइंट क्यों फाइंड किया? सो बेटे याद रखिएगा, जिस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है उस लाइन के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं पता था हमें. आफ्टर फाइंडिंग दिस मिड पॉइंट, अब हमें पता चल गया कि ये जो मिड पॉइंट है ना, ये उस लाइन पे भी मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल ये है ना वो पॉइंट, तो ये लाइन इस लाइन पे तो मौजूद है ही, इस लाइन पे भी मौजूद है. सो दिस इज द रीजन दैट वी हैव टू फाइंड द मिडपॉइंट ऑफ द लाइन ए बी. क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हुई है, यहां से पता चला व्हाट इज बाइसेक्टर. बाइसेक्टर की वजह से पता चला कि हमें ये मिडपॉइंट फाइंड करना था. ओके, कंटिन्यूइंग. So let's plot the point. कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट. तो हमने प्लॉट कर दिया. मिड पॉइंट समवॉट हियर होना चाहिए. सो लेट्स सी हम सही. ठीक है, हमने मिड पॉइंट को प्लॉट कर दिया. फाइन यहाँ तक. ओके, व्हाट इज the thing that we have to do the next? Now look, this is a question. The question says, form the equation of the perpendicular bisector of line AB. Form the equation of the perpendicular bisector of line AB.
लाइन ए बी की इक्वेशन नहीं बनानी है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बनानी है। तो सो फार व्हाट वी हैव डन, अब तक हमने एक ही चीज की है कि उस लाइन से गुजरने वाले पॉइंट हमने मालूम किया विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। चलो अब देखते हैं, अगर वो लाइन मैं बनाता हूँ ऑन द ग्राफ, अभी तो हमने कैजुअली इसको बना दिया था, ठीक है, प्रॉपर्ली बनाते हैं। तो हमने बनाया दिस इज द मिड पॉइंट। ये जो ब्लू कलर से लाइन नजर आ रही है ना बेटा, दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। हमें इस ब्लू वाली लाइन की ही इक्वेशन बनानी है। हमें इक्वेशन किसकी बनानी है, इस ब्लू वाली लाइन की बनानी है, लाइन ए बी की नहीं, ए बी को जिसने बाइसेक्ट किया उसकी। ठीक हो गई जी बात। अब इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, so we will have to follow the three steps. What we'll have to do, we'll have to follow the three steps. So very first step is saying that we have to find the slope or the gradient of the line. ठीक है, अब यहाँ से बेटा प्लीज गौर से पढ़िएगा। I am using the laser point. We don't know the slope of this line. Do we know? No, we don't know. But we know that the two lines are perpendicular to each other. This is very much important. हमें स्लोप नहीं पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन का, लेकिन हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के, लाइन ए बी के। ठीक है जी। Therefore, using the relationship between the slopes gradients of the two perpendicular lines, तो हमने जो कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। ठीक हो गई जी बात। सो वी कैन easily find the gradient of the perpendicular bisector of line AB. Yesterday I told you we are having one, two, three things. Out of these three things in this relationship, -1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, फाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ अनदर लाइन, लाइन 2 कह लो या जो के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का मालूम होना लाजमी है, बिकॉज वी नो और वी आर गिवन विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी by using the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, we can find the slope of line AB. By using this formula, we can find the slope of line AB. अब देखिए बेटा, इनमें से हमें ये पता है, हमें -1 की वैल्यू पता है, सिर्फ और सिर्फ m2 फाइंड करना पड़ेगा आफ्टर नोइंग द स्लोप ऑफ AB विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक होगी जी बात। सो स्टेप नंबर 1 पे ही हमें पता चल गया that what are the things that we have to do. Now look, for finding the slope of the perpendicular bisector of line AB, we have to find the gradient of line AB itself. So gradient of line AB, we know the coordinates, they are दोनों y coordinates and दोनों x. So -1 -3 upon 3 -1. -1 -3 upon 3 -1, we got the slope of the line AB. लेकिन अभी भी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टेप नंबर 1 में मुझे AB का स्लोप नहीं चाहिए, AB की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए। So what we will do for this, we are going to use that relationship in the next slide. Look here. We know that the slope of AB is -2. ठीक है, we are having three things. -1 की वैल्यू हमें पता है, स्लोप पता चल चुका है, so we have substituted the values. m2 को सब्जेक्ट बनाया, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई, तो मुझे ये पता चल गया कि दिस इज व्हाट
This is actually the slope of perpendicular bisector. This is actually what? The slope of perpendicular bisector. वो कितना आ गया? 1/2. What is this? This was the end of very first step. पहला स्टेप अभी खत्म हुआ है हमारा. पहले स्टेप में क्या बोलता है? जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उस लाइन का स्लोप बताओ या फाइंड कीजिए. तो हमने जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उस लाइन का स्लोप मालूम कर लिया एंड दैट स्लोप्स वैल्यू इज 1/2. Second step, it says that find the y-intercept of the line. Okay, c equals to y minus mx. c equals to, अब देखो मैंने तीनों ब्रैकेट्स यूज कर लिए हैं. ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर c is only the thing which is to be known. We have to put the three things. y and x are the coordinates and m is the midpoint. अब सर मुझे कोऑर्डिनेट याद है, मैंने कहा था कि हमने मिड पॉइंट क्यों फाइंड किया है. नाउ लुक हियर, we are using the value of the midpoint. देखो हमें दो चीजें पता है कि स्लोप इस लाइन का आया है 1/2 और इस लाइन से एक पॉइंट गुजरता है या ये लाइन एक पॉइंट से गुजरती है जो कि है 2,1. तो 2x की जगह पे पुट किया जाएगा, 1 y की जगह पे पुट किया जाएगा, m की जगह पे 1/2 पुट किया जाएगा. सो हमने सॉल्व किया. जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, 2 से हो गया 2 कैंसिल, 1 minus 1 is 0. So now we also completed step number 2. हमने step number 2 को भी complete कर लिया. Now let's see. Look, I have for equation we have done step number 1. उसका आंसर क्या आया है? 1/2. We have done step number 2. उसका आंसर क्या आया? c equals to 0. Now we have to solve step number 3, or we have to perform the step number 3. The step number 3 says we have to put the values of m and c into the equation y equals to mx plus c. Look here. Sorry. Y equals to mx plus c. This is the main equation of a straight line. देखो बेटे, m और c की जगह पे मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स यूज किए हैं, x ऐसा का ऐसा और y ऐसा का ऐसा. For forming the equation, we do not have to put the values instead of x and y. We just have to put the values of m and c, the slope and the y-intercept. So we know m की जगह क्या पुट किया जाएगा? स्टेप नंबर 1 का आंसर. c की जगह क्या पुट किया जाएगा? स्टेप नंबर 2 का आंसर. So the equation, जब हमने इसको सॉल्व किया, प्लस 0 इज नथिंग, प्लस 0 हमें नहीं लिखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, y equals to 1/2 times x is actually the equation of the perpendicular bisector of the line AB. ये AB की इक्वेशन नहीं है, perpendicular bisector of line AB की इक्वेशन है. ठीक है. सो फार जितने क्वेश्चंस, सॉरी, मुझे जितने आंसर्स मिले थे, SUJA, सुजा was the only one जिसने इसका सही आंसर बताया था. सुजा, शाबाश बेटे. Okay, so look here. This blue line was the perpendicular bisector line. इस ब्लू लाइन की इक्वेशन हम मालूम कर चुके हैं. हमें AB की इक्वेशन नहीं चाहिए थी, हमें AB के perpendicular bisector line की इक्वेशन चाहिए थी. So the equation of that line is y equals to 1/2 times x. 1/2 times x. इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं. देखो बेटा, अगर मैं 2 को वहां भेज देता हूँ तो 2 यहाँ पे डिवाइड होगा, 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2y equals to x. This was the end of this question. If you people is having any of the query, please let me know, otherwise I will move forward.
ओके पलाच mx plus c. चलो मैं आपको ये समझाता हूँ with the help of one slide. Suja, you deserve it. Palach, I'm going to tell you about this. Your question is what is mx and c supposed to mean? बेटा mx and c इवन y की भी बात कर देते हैं तो जो y and x है ना बेटे y and x are the coordinate points. Let me find the slide of equation of a straight line. So, Balaj, and if anyone else is having any question related to this, so please look here. Beta, this is known as the slope-intercept form, y equals to mx plus c, where m is the representation of slope and c is the y-intercept. M is the slope and C is the y-intercept. X and Y are the coordinate points. बेटा याद है कोई सा भी पॉइंट उठा लिया जाए on the coordinate geometry वो हमेशा x, y के फॉर्मेट में लिखा जाता है. तो x and y are the coordinates, M is the slope and C is the y-intercept. Then we have to follow these steps to form any of the straight lines equation. Step number 1 is जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करो with the help of this formula, or we can also use y2 minus y1 upon x2 minus x1. Second, we have to find the y-intercept. So with the help of which formula? This c equals to y minus mx, where once again m is the slope, x and y are the coordinates, and c is the y-intercept. We just हमने इसी फॉर्मूला के अंदर सब्जेक्ट चेंज किया, mx वहां भेज दिया, mx वहां जाके माइनस हो जाता है. Nothing else we have done here. We have used only one formula for this equation of a straight line. Okay, now let me know, Balaj, if it is clear. I'm going to assign you some question as well. So those who are leaving, I would suggest not to leave. Chalo. This was the video that जहाँ से हमने ये क्वेश्चन उठाया था, ठीक है? So be careful. Two parallel lines, their slopes are always equal. Two perpendicular lines, the product of their slope is always -1. We can change the subject to find any of the slopes. Then it was asked to find the equation of the perpendicular bisector of line AB. So let's see इसकी equation या इसके steps क्या. Look carefully. First of all उसने A और B points को plot किया, join कर लिया, ठीक है. फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश की है. अच्छा, मिड पॉइंट समझा रहा है ये बिकॉज इट हैज डिवाइडेड इट इनटू two equal halves. That's why
This blue colored line is the bisector of line AB, and because it is making the 90-degree with the green line or with the line AB, that's why it is also the perpendicular. तो at a time ये दो काम कर रही है. पहला काम क्या किया इसने? Perpendicularly fall किया. Second thing is bisect किया, half किया. That's why. So we have to find the equation. अच्छा, इसको इसने नाम दे दिया CD. तो हमने line 2 नाम दिया था या perpendicular bisector दिया था. So इस CD line की equation बनाने के लिए y equals to mx plus c हम लोग यूज करते हैं. इसने यूज किया है b का वर्ड. So none of the मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. ओके, सबसे पहला काम है m मालूम करना है इस ग्रीन लाइन का. So what is the slope of CD? We don't know, but we know that slope of AB और slope of CD को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर -1 होगा. So let's find the slope of AB. उसके बाद क्या बोला उसने कि we have to find the y intercept. तो y intercept के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? मिड पॉइंट ऑफ AB. That we did also. तो स्लोप के लिए इसने फॉर्मूला लगाया. स्लोप आ गया -2 किस चीज का? लाइन AB का. हमारी वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? 1/2. ठीक हो गई जी बात. सेकेंड थिंग, मिड पॉइंट फाइंड किया, आ गया 2,1. 2,1 को हमने पुट किया C का आंसर. तो इसने B का वर्ड यूज किया है, हमने C यूज किया है. C का आंसर आ गया 0. हमारे पास भी यही था. So the equation of that line is y equals to x upon